New Oxford Modern English Book, Class 6th, Chapter 3, A Polar Explorer, written by Claire Horsburgh. Question answers and complete comprehension with explanation in Hindi. Words to know. Word meaning: caribou, reindeer. Disputed, disagreed with. जो हमें सही नहीं लगता, दैट इज़ डिसएग्रीड. इनसर्कलिंग, सराउंडिंग, जिसके चारों तरफ. एक्सपीडिशन, अ जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ क्लियर एम टू एक्सप्लोर. एक जर्नी, एक यात्रा करना कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा कुछ नई चीज़ खोजने के लिए. इन्यूट, प्रीवियसली एस्किमोस, द पीपल हु लिव इन द आर्कटिक रीजन. ये एस्किमोज होते हैं और ये लोग जो हैं वो आर्कटिक रीजन में रहते हैं. नॉर्वे, अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप. ओबे, टू डू वॉट यू हैव बीन टोल्ड टू डू बाय समवन इन चार्ज. ओबे यानी किसी की आज्ञा माना. ऑस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे. ओस्टेंटिशियस, डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले, कोई चीज़ दिखाना बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के. पैसिफिक मीन्स पीसफुल, शांति भरा. प्रिजर्वेंस, persistence in doing something despite difficulties और delays, किसी चीज़ में लगे रहना. Reciprocate, repay someone's action in a similar way, जैसे किसी ने कोई एक्शन किया है उसके जवाब में या उसके आंसर में उसी तरीके से जवाब देना. स्क्रूटनी, क्लोज केयरफुल एग्जामिनेशन, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना. wrecked, destroyed at sea, समुद्र में किसी चीज़ का टूट के बिखर जाना. comprehension, answer the following question. Question number 1A. What did Amundsen's mother want him to be? Did he follow her wishes? अमुंडसेन की मदर उनको क्या चाहती थी, वो आगे चल के ज़िंदगी में क्या बने, क्या उन्होंने उनकी बात मानी थी? Amundsen's mother wanted him to be a doctor, वो उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी. Yes, he followed her wishes. But after his death, he fulfilled his own dream as an explorer. उन्होंने अपनी मदर की विश पूरी करने की कोशिश की, पर जब उनकी मदर जो है उन्होंने अपनी मदर की विश मानी, पर जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो वो उन्होंने अपने सपने पूरे किए और खुद एक एक्सप्लोरर बने. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? How did he prepare for this as a child and as an adult? किन चीज़ों ने अमुंडसेन को इंस्पायर किया था एक्सप्लोरर बनने के लिए और किस तरीके से वो बचपन में बड़े होके इसके लिए प्रिपेयर हुए? आंसर, एज अ चाइल्ड अमुंडसेन रीड अबाउट ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. जब अमुंडसेन छोटे थे तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ते रहते थे. एंड ही जॉइंड एज मनी स्पोर्ट्स टीम्स एज ही कुड, और उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स ज्वाइन की थी. एंड स्लेप्ट विथ हिज विंडोज़ वाइड ओपन, और ठंड में भी इवन अपनी खिड़कियां खोल के सोते थे. डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वियन विंटर्स, वो नॉर्वे में रहते थे, वहाँ की ठंड जो थी एकदम फ्रीजिंग ठंड थी, बहुत ज़्यादा शरीर को ठंड सहने की शक्ति आदत लगा रहे थे. सो दैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर. और वो चाहते थे कि वो फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, जैसे ही उन्हें एक्सप्लोरर बनने का चांस मिले वो ज़रूर बने. Next question. What key skills did Amundsen learn about survival? Look at the paragraph 4 and 6. अभी skills कौन कौन से Amundsen के पास survival skills थी? Answer. Amundsen watched, listened and learned some useful skills. उन्होंने कुछ skills सुनी थी, सीखी थी, ध्यान दिया था. He observed how the doctor's hunting skills provided the crew with a fresh meat. उन्होंने देखा था कि एक डॉक्टर के साथ जब वो गए थे जर्नी पे तो उनकी कैसे शिकार करने की जो स्किल है वो कैसे क्रू को, जो उसके क्रू मेंबर है ना, जो शिप में दूसरे मेंबर्स हैं, उनको फ्रेश मीट
फ्रेश मांस मछली का या प्रोवाइड करता है जैसे कि वो अच्छे से रह सकें। एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वे। स्कर्वे एक डिजीज़ का नाम है, उससे दूर, उससे बचने के लिए। ही ऑल्सो पिक्ड अप आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स। उन्होंने आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स को भी अपने अंदर उतार लिया था, सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज, स्लेज को यूज़ करना। अमंडसेन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर टू वियर। उन्होंने फर पहनना शुरू किया था, विच वर मच वार्मर दैन वुडन क्लोथ्स ही हैड, जो कि काफ़ी गर्म थे उनके जो वुलन क्लोथ्स हैं उसके कंपेयर में। What made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen achieve it? It was difficult to pass through the Northwest Passage due to very cold temperature. The area is frozen over most of the time. जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज था वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा था। मोस्ट ऑफ द टाइम, साल भर में जो एरिया है वो पूरे टाइम फ्रोज़न रहती है। एंड फॉर ए शॉर्ट वाइल, कुछ ही टाइम के लिए, ईच ईयर द आइज अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट कनाडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ द वेसल्स थ्रू। और जो नॉर्थ कनाडा है वहीं पे ही कुछ ही एरिया में बर्फ़ कुछ टाइम के लिए ही वेसल्स को, बड़ी शिप्स तो नहीं जा सकती, छोटी छोटी वेसल्स को ही सिर्फ रास्ता देती है मूव होने के लिए। अमंडसेन यूज्ड अ स्मॉल शिप। अमंडसेन ने भी एक छोटी सी शिप यूज़ की थी कॉल जरा एंड टू पास थ्रू दिस वाटर, और वो उस पानी से पास हो सकती थी। एंड कवर द शैलो एरियाज़, और वो छोटी छोटी एरियाज से, शैलो एरियाज से भी जा सकती थी। दैट वुड हैव रैक्ड बिगर शिप्स, जो बड़ी शिप्स अगर वहाँ से जाए तो वो उस एरिया में बड़ी शिप्स टूट के बिखर जाएं। During the winters when the ship was frozen into ice, the crew watched the Inuit people who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge. When did Amundsen get to the North People? The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. Finally, in 1926, Amundsen went it to the North Pole. North Pole में वो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो अनसक्सेसफुल था। 1926 में वो अमुंडसेन ने विन कर लिया नॉर्थ पोल पे भी। What did Amundsen's companion mistake the Eskimo people for and why? Amundsen's companion mistook the Eskimo people for caribous because they could only see them from afar and they appeared to be black dots on the skyline. How did Amundsen talk to the Eskimo? Amundsen talked to the Eskimos by expressions of the face, nods and shakes of the head, gesture and tones of their voice. More difficult question. How Amundsen died? In June 1928, aged 56, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission, disappeared. जिस प्लेन से अमुंडसेन जी जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे एक रेस्क्यू मिशन में, वो अचानक गायब हो गया। Amundsen and the rest of the crew were never seen again. अमुंडसेन और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे उसे कभी नहीं ढूंढ पा, क्रू मेंबर्स को फिर कभी नहीं ढूंढा जा सका। Why is it colder at the South Pole? It is colder at the South Pole than the North Pole, as there is no sunlight from March to September, and even when the sunrise is visible, it stays on the horizon from September to March. बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, क्योंकि सनलाइट जो है वो मार्च से सितंबर तक है, वो भी एक हॉरिजन में ही रहती है। उतना ठंड नहीं दे पाती है, उतनी गर्मी सनलाइट नहीं दे पाती है जितनी नॉर्मली देती है सनलाइट। Amundsen said, "Victory awaits him who has everything in order." Explain what he meant. Amundsen जी का बोलना था कि जीत उसी को मिलती है जो हर चीज़ ऑर्डरली करते हैं, प्रॉपरली करते हैं। इसका मतलब क्या?
Victory awaits him who has everything ordered means that if a person does everything in a systematic manner, he will automatically achieve his goal. Question number 2 वो मैं बाद में दिखा दूंगी. Now answer the following questions with reference to context. Some other two-legged caribous joined the first until five figures were outlined against the sky. What were the two-legged caribous? The two-legged caribous were the Eskimos. How many people were on Amundsen's side? Amundsen and two other people were on Amundsen's side. Two other people were on the Amundsen's side. Their leader, seeing this pacific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. What is meant by the phrase pacific move? Pacific move means peaceful move. It referred to Amundsen's men throwing their rifles on the ground when faced with the Eskimos. How did the Eskimos respond? Answer. The Eskimo responded by imitating Amundsen's men and throwing their bows and arrows on the ground as well, working with words. Looking again at the extract from the Amundsen's book, find out what these words mean and use each one in the sentence. Steadfastly, dutifully, firm, unwearying. Sentence. She steadfastly refused to leave the court. Ostentatiously, in a very obvious way, she ostentatiously showed her dislike of it. Pacific, peaceful, loving, peace. His actions were purely pacific and the opponents appreciated it. Reciprocate, to behave or feel towards somebody in the same way as they feel towards you. किसी तरीके से उसी तरीके से behave करना जैसा कोई और हमसे कर रहा है. She reciprocated the kindness shown to her by elderly couple. You have learned these proverbs. Can you complete them? The early bird catches the worm. Whoever takes the earlier opportunity will gain. जो जल्दी कोशिश करेगा उसे ही opportunity मिलेगी. Look before you leave. Meaning, think of the consequences before you act. कुछ करने से पहले सोचना ज़रूरी है. Learn to walk before you run. चलने के पहले, दौड़ने के पहले चलना सीखना ज़रूरी है. Learn basic first and then go for advance. Don't count your chickens before they are hatched. You should not depend or have hope of something that has not yet happened. You may lead a horse or to water, but you can't make it drink. You can give someone an opportunity but cannot force them to take it. Copy the sentence that are true and correct the sentence that are wrong and write those out too. Scurvy is caused by lack of vitamin C. Answer is true. Getting to the North Pole was easy. Answer false. Actual answer is getting to the North Pole was not easy. Third, Amundsen was the first person to be able to claim that he had been to both the poles. True. Fourth, it is always dark at the South Pole. Answer false. From March to September. E. The North Pole is not on land. False. No animal live near the North Pole. Answer false.